सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां श्रमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुखपटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग महर्षि व्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के अंतर्गत अष्टम अध्याय पारायण श्रृंखला में पुनः समुपस्थित हैं। आइए पारायण प्रारंभ करने के पूर्व में आपको केवल स्मरणार्थ निवेदित करना चाहूंगा कि प्रकृत इस अध्याय में महर्षि व्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अष्टमाध्याय में उत्तरा के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रतिष्ठित परीक्षित जी की द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान का रक्षा करना तथा कुंती के द्वारा श्री कृष्ण स्तुति एवं युधिष्ठिर जी का ताप का वर्णन इस प्रकृत अध्याय में किया गया है। आइए हम लोग पाठ को प्रारंभ करते हैं। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिक्षताम् दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य यजुस्त्रियः तेन नियोदकं सर्वे विलप्य चाभृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरजः पूतसरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधवा सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धून् सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा शतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषा याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरीवातनोत आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्येयोद्भव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्म द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे विधावन्तीम् उत्तरां भवविह्वलाम् उत्तर उवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश सरस्तप्तायसो विभो कां दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। श्रुत उवाच उपधार्य वचस्तया भगवान् भक्तवत्सला अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्चसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राण्युपाददुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः अन्तस्तः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः समायया वृणोद्गर्भं वैराट्याः कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेजासाद्य शमसाम्यद्भ्रगूद्वः मां स्थाहि तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह प्रथासते। कुन्त्युवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजमनिकाच्छन्न मग्याधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यनौरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये यथा हृषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं तुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुद्विपर्गणात् विशान् महाग्ने पुरुषादर्शनात् सत्सभाया वनवासकृच्छतां मृदे मृदेनेकमहारथाश्रितो दौण्यश्रुतश्चास्म हरे विरक्षिताः विपदः सन्तु नः सस्वत्तत्र तत्र जगद्गुरोः भवतो दर्शनं यच्चात् अपुनर्भव दर्शनं जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एधमानमदप्पुमान् नैवार्हत्यद्विधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरं नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलि न वेद कश्चित्
भगमश्चिकीर्तितं तमेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयतोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं नृषिषु यादश्रु तदत्यन्त विडम्बनं गोप्या ददे त्वयि कृतागशिदामतावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य क्षामां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय चासुरद्विषां भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ शीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थिता तवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त भीक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयैव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रबाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्यनस्त्वं सुकृतेर्हितं प्रभो जिहाससि सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितांसां केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिस्स पाण्डवा भवतो दर्शनं जर्हि हर्षिक्याणामिवेशतुः नेयं शोभयिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः इमे जनपदाः स्मृद्धाः सुपौकौषधिविरुधा वनाद्रिन् दुदन्वन्तो हेदन्ते तव वीक्षितैः अत विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं सिद्धे दृढं पाण्डुषु विष्णुषु त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिर्मुद्वहताद्धा गंगे वौघमुदन्वते श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णिऋषभ भाव निगृग राजन्यवंश दहनानपवर्गवीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते श्रुतुवाच पृथयेत्थं कलपदैः परिणूताखिलोदयः मन्दं जहाश वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया तां बाढमित्युमुपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयं स्त्रियश्च सुपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाद्यैरीश्वरैहाज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर्नाबुध्यत् सुचार्पितः आह राजा धर्मश्रुतश्चिन्तयन् सुहृदां वदं प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवसंगतः अहो मे पश्यताज्ञानं हृदिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहवो मे क्षौहिणीर्हताः बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुः न मे स्यान्निरयान्मोक्षो यापि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्मयुद्धे वधोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पितैः शासनं वचः स्त्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योषा विहूत्थितः कर्मभिर्ग्रहमेधैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुं यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे कुन्तीस्तुति युधिष्ठिरानुतापो नाम अष्टमः। हरि ओम तत्सत। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमो नमः।